रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। वी हैव सम awkward pretexts, बहाने। दिस इज कॉल्ड बहाने। वी से मुराद वी ह्यूमन बीइंग्स, नॉट वी टीचर्स। ठीक है, मैं तमाम जो पूरा हम इंसान हैं, ठीक है, despite the fact we are men or women, we are human beings and we have pretexts and we learn these from our parents, from our culture. In every culture of the world, children have pretexts. बच्चों के पास बहाने होते हैं। We are just kids, even we are 30, 40, 50, whatever. ठीक है, क्योंकि we are the breed of a culture where pretext is dominant. जहाँ पर के हमें ये चीज़ सीखी जाती है और इसको हम प्रैक्टिकली जो है वो इसको हम डिस्प्ले करते हैं अपनी लाइफ में। I'm not talking about as teachers, I'm talking about human beings. Please keep it in mind. Our subconsciousness or inner self should never enjoy slumber. Slumber in fact is need. ठीक है, कि हमारे ज़मीर को, हमारे अंदर का एक इंसान है, उसको सोना नहीं चाहिए। ठीक है, as heart lives, heart is always working when we are asleep. ठीक है, हम सो गए होते हैं but heart is working. Similarly is the case with our inner self. It does not sleep. If we dream good, it means that our inner self is good. If we dream a scary dream we have, so it means that our inner self is scared of something. There is some fear. If we have an educated dream, right? As a teacher, you should have experienced someday in your life when you went to your bed, you slept and had a dream about teaching. कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप किसी को पढ़ा रहे and that must be the child who is never interested towards studies. आप उसको पढ़ा रहे हैं. This shows your devotion, shows your grace. This shows that your inner self is working. ऐसा हुआ जरूर होगा, कभी हुआ है किसी के साथ कि एक ऐसे बच्चे को आप पढ़ा रहे हो जो कभी कभी पढ़ता ही हुआ। Have you ever experienced? कभी मतलब ख्वाब में लाइफ का तो आपका है, आपको माशाल्लाह एक्सपीरियंस है, लेकिन कभी ख्वाब में ऐसा हुआ या कभी ख्वाब देखा हो टीचिंग का ख्वाब देखा? ख्वाब ज़्यादा होता है तो एक बीच में ख्वाब आ ही जाता हो।